all doing well. I'm Dikshita Tripathi and I work as a human rights activist for All India Human Rights Association. आज हम लोग बात करेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन की। राइट टू बी फॉरगॉटन is the right to have private information about a person be removed from the internet searches and other directories under certain circumstances. यानी कि इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से रिमूव करना आजकल एक बहुत कॉमन नॉर्म हो गया है मीडिया ट्रायल्स का। जब भी किसी इंसान को अक्यूज किया जाता है किसी क्राइम के लिए या किसी इंसान के अगेंस्ट कोई चार्जशीट फाइल की जाती है तो हमारे कोर्ट की जजमेंट से पहले कोर्ट का काम मीडिया ही कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक इंसान है ए, तो उसके ऊपर लेट्स अज्यूम एक मर्डर का चार्ज है, तो कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ही मीडिया और पूरी दुनिया उसे मर्डरर मान लेती है। लेकिन अगर वो 4 साल 5 साल बाद कभी भी और एट द एंड ऑफ द ट्रायल उसको एक्विट कर दिया जाता है और उसके सारे चार्जेस रिलीज हो जाते हैं, लेकिन मीडिया पे तो वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई उसके फ्यूचर एम्प्लॉयर उसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट वेबसाइट्स के थ्रू, तो उन्हें तो यही मिलेगा कि उस इंसान के ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं और उसके एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन जाएगी जो कि इनकमिंग और अपकमिंग जॉब्स पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी। उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये फेमस कोड कहा था कि इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन इज लाइक टूथपेस्ट, once it is out of the tube it cannot be taken back, and once the information is in the public domain it will never go away. So this is a very serious issue. Some of the instances when the court equated right to be forgotten as right to privacy. Right to be forgotten and right to privacy go hand in hand because you cannot have privacy when your information is out there in the public. Justice Sanjay Paul observed that the right of an individual to exercise control over his personal data and to be able to control his or her own life would also encompass the right to control his existence on the internet. And when petitioner Zorawar Singh Mundi approached the Delhi High Court requesting to remove a judgment from Google and Indian Qanun, the Delhi High Court recognized his right to be forgotten and allowed the same. Now, when can this right be exercised? The Honorable Supreme Court laid down the certain conditions when this right cannot be exercised. That is, the right to be forgotten cannot be exercised in these situations when exercising the right of freedom of expression and information is important, and when the information that is published is in compliance with legal obligations, when the performance of the task carried out is in public interest or public health, that is to create awareness. Fourth is for achieving purposes in the public interest. Fifth condition is that the information published is for the research or scientific purposes, and then lastly, the information published is established as an exercise or defense of legal claims. Moving on, the right to privacy and right to be forgotten is not a defined right as per Indian Constitution, but it has been added under the Personal Data Protection Bill 2019, emphasizing Section 20. Section 20 says that the bill gave an individual the right to restrict or prevent the continuing disclosure of the personal data, which is the right to be forgotten, especially when such data has fulfilled these three conditions. Firstly, it has served the purpose for which it was collected and it is no longer necessary for the said purpose. Secondly, it was made with the consent of individual, but later on the individual withdrew his consent. And lastly, it was made contrary to the PDP bill, that is the Personal Data Protection Bill, or any other law in force. आज के ज़माने में प्राइवेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट हो गई है क्योंकि हर चीज़ बहुत इजीली पब्लिक हो
लिए राइट टू बी फॉरगॉटन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।